So now we start with a numerical question on decision theory. So please note, I have written the strategies, courses of action at the top and the state of nature on the left side. State of nature is an uncontrollable factor. ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लिखा है. ओके, आपको लिखने की जरूरत नहीं है. And course of action, this represents the controllable factor. It is something which is in your hands. Okay, so it is controllable. It is the action that you have to take. It is the action that you have to take. Now, please have a look at it. The state of nature are three: N1, N2, N3. If N1 is happening in the environment, okay, what is the action that I want to take? I have three different courses of action: S1, S2, S3. If the state of environment is N1, and if I choose action S1, so the payoff is 2,500. But if I choose action S2, then the payoff becomes 3,500. And if I choose S3, then the payoff becomes 5,000. So naturally, अगर हमें पता है कि N1 होने वाला है, so at that moment I will choose S3 क्योंकि उसमें 5,000 सबसे ज्यादा payoff मिल रहा है. But the main thing is हमें पता ही नहीं है कि कौन सा state of nature होने वाला है. So we have three different states of nature and उसके हिसाब से three different course of action. So this particular table is called as payoff table. You will notice there are 9 combinations over here. Okay. Now, what do you mean by maxi-max criteria? Yes, anyone? Maxi-max. इसमें minimum word है ही नहीं. Right? Please focus on this. It is max. Right? तो आपको choose करना है what is the maximum over here? What is the maximum over here? $5,000, ma'am. नहीं, for each action, what is the maximum payoff? 2,500. Second वाले के लिए 5,000. Okay? तो आपने maximum payoff choose किया, right? So now, what does the maxi-max criteria say? Maxi-max. Maximum choose किया, उसमें भी maximum. इन तीनों में maximum होता है 5,000. And 5,000 is representing S3 action, right? So conclusion would be hence, as per maxi-max criteria, we choose S3 action resulting in payoff rupees 5,000. Agreed, all of you? Please write it down.
Can I proceed further now? हाँ जी, हाँ। तो आपको वहां के अक्षर पे ध्यान देना है। मैक्स। तो यहाँ पे आपको मिनिमम पे ध्यान देना है। सो कैन यू ट्राई इट योरसेल्फ? कैन यू ट्राई इट योरसेल्फ? मैक्सिम मिन क्राइटेरिया। तो आप क्या ढूंढोगे? मिनिमम पे ऑफ ढूंढोगे एंड उसके बाद आप क्या करोगे? मिनिमम में से मैक्सिमम। मैक्सी मिन है, ठीक है। जो लास्ट के 3 कैरेक्टर्स हैं मिनिमम है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? मिनिमम पे निकालोगे। एग्रीड? और फिर क्या बोला है? मैक्सी मिन। मिनिमम में से आपको मैक्सिमम चूज करना है। अंडरस्टूड? क्लियर पूर्वा? क्लियर ना? तो प्लीज ट्राई इट आउट ऑल ऑफ यू। Maximum criteria. What is the minimum of S1 course of action? Equals, in the case of what is the minimum? 1000. 3 what is 1000? Taken the minimum pay of C min. So now I'll choose the maximum out of these minimum payoff. Hence, as maximum area, we choose maximum value 1500. That is, we choose S as the course of action. Agree of you?
for expected monetary value method. Monetary value method. If in the examination we are asking you to do expected monetary value method, we will give you the probability also. Probability also. So suppose it is 0.4, 0.4 and 0.2. Okay. So I have taken the same question. Okay. And I have made the probability. So what do you mean? Probability of 0.4 indicates probability that N1 state of nature is occurring is 0.4. The probability that N2 state of nature is occurring is 0.4. And same way, N3 state of nature is having a probability of N2 that is 20%. 20%. So how do you do the expected monetary value? You have to find out the expected payoff. You find for each state of nature. Can you tell me? You have the probability, the payoff over here. You have the probability over here. How will you get expected payoff? Anyone? Multiply. So 2,500 can get 0. Please tell me what's the answer. Apply the formula. So you compare and then we can cross verify. Probability is one factor, right? So each and every payoff you will multiply with probability and then write down over there and you will find out the total. You will find out the called as EM expected EMV. Calculate teacher.
हो गया? So what is the value over here? Please learn little bit of Excel also. Now over here, you have to multiply the payoff with the probability, right? So मैंने formula लगाया है and then I'm dragging it. Okay. And then I apply the total formula sum. Okay. Now देखा जाए तो ये सेम फॉर्मूला S2 एंड S3 में भी लगेगा. कैन आई जस्ट कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला एंड डू इट? नहीं, क्यों नहीं? वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी. नाउ प्लीज नोट, हमने यहाँ पे C6 लिया है, दैट मीन्स दिस वन. तो ये वाले वैल्यूज, अभी आपको ये वाले वैल्यूज लेने हैं, बट प्रोबेबिलिटी का कॉलम सेम रहेगा, राइट? इफ यू वांट टू फिक्स अ पर्टिकुलर कॉलम, प्लीज हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला. यहाँ पे C26 मल्टीप्लाइड बाय F26 है. तो F हमें कॉलम फिक्स करना है, तो उसके पहले आपको डॉलर लगाना है. डॉलर व्हेन यू यूज इट इन द फॉर्मूला, वो फिक्स करता है उस पर्टिकुलर वैल्यूज को. तभी मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया. Now you will notice the formula is D26 into F26. Okay. So are you getting these answers? All of you got the same answer? Okay. So what will be the conclusion? Hence, as per EMV criteria, as per EMV criteria, we choose which course of action will you choose? Which one? Highest. Highest is S3. So we choose S3 as course of action, as it results in highest EMV of rupees 3,200. Agreed, all of you? Okay. Any doubts in this? Probability जो है, they will give you in the question itself. They will give it to you in the question itself. तो आपको नहीं सोचना है. Okay. So this probability of 0.4 indicates what is the probability that the state of nature is N1. So for 0.4, that is 40%. Probability that the state of nature is N2 is again 0.4, that is 40%. For N3, it is 20%. We don't have to assume, it will be given in the question. Okay. Now, suppose you don't know the probability. So in that case, what will you do? But they are telling you to take the probability into consideration. That method is called as Laplace criteria. That method is called as Laplace criteria. The probability is not given, but you have to take the probability into consideration. So for example, ये same question हम लेते हैं. Now we don't know the probability, but इतना हमें पता है the total probability is always 1, right? So because there are three states of nature, तो हम क्या करेंगे, 1 divided by 3 करके सबका probability करेंगे. That is, we assign equal probability to each state of nature. तो अगर 4 state of nature होंगे तो 0.25 आ जाएगा. 5 state of nature है तो 1 divided by 5 हो जाएगा. सबके लिए सेम प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ पे 3 स्टेट ऑफ नेचर है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग 1 divided by 3. Okay. Any doubt in this?
So you will notice expected monetary value method and Laplace criteria are similar. The only thing is probability change हो जाएगा. Expected monetary value में probability दिया हुआ है क्वेश्चन में. Laplace criteria में आपको कैलकुलेट करना है डिपेंडिंग अपॉन कितने स्टेट ऑफ नेचर है. 3 है इसलिए 1 डिवाइडेड बाय 3 किया. 5 होंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 5. Calculation same. So please complete it and tell me what's the answer. The probability because if okay. Are you getting the सबका सेम है. नहीं चलो तो around 2003 दोनों का सेम. सेम हमारा आंसर क्या रहा आपका.
तो आपने खाली ओके, तो एप्रोक्सीमेटली तो ये फिगर आया होगा ना? आपका कितना आया? आपका कितना आया? फर्स्ट वाले में कितना आया? तो 2500 के अराउंड ही है ना? 2475 आया है। ओके, नेक्स्ट वाले का कितना आया? 2805। नेक्स्ट वाले का 2805। दोनों का सेम आया है। यहाँ पे पॉइंट था, इसकी वजह से शायद वैल्यूज चेंज है। तो आपको आप यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.33 यू कैन राइट द फ्रैक्शन 1/3 भी कर सकते हो। दैट इज 2500 divided by 3 to that. But I will not deduct marks, so I will go with whatever you डेसिमल की वजह से राउंड ऑफ फैक्टर का प्रॉब्लम आ रहा है। वाला जो अमाउंट है ये पूरा 0.33 रेक्ट वाला कंसिडर करने के बाद ये वैल्यूज आते हैं। 1000 into 1 divided by 3 तो 833 आएगा। ठीक है, ओके। सो व्हाट विल बी द कंक्लूजन? As per Laplace criteria, we can choose S2 or S3 as both of them have the same expected payoff rupees 2833. Okay? Sorry, स्क्रीन नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है। अनिता तो अभी तक हम लोगों ने कितने मेथड्स किए हैं? मैक्सी मैक्स, मैक्सी मिन, expected monetary value, Laplace. So now to the fifth method, that is minimax regret criteria. हाँ जी, we can write expected payoff. Expected payoff we लिख सकते हैं। Okay? Yes. So we now go to the fifth method, that is minimax regret. Minimax regret method is based on the philosophy of opportunity loss. Do you know what is opportunity loss? You know what is opportunity loss? For example, I gave you two items. ठीक है, या तो आप पुलाव खाओ या फिर पाव भाजी, दोनों में से एक चीज मिलेगी। तो सपोज यू आर चूजिंग पुलाव, it means you are sacrificing pav bhaji. The opportunity loss is because you have chosen one action, it means you are losing something else. So that is the opportunity loss in simple language. Okay. So first of all, please read how, just observe how this particular method is to be done, because it थोड़ा सा difficult होता है concept simple, but these are the statements
और ये आपके कोर्स ऑफ एक्शन है। आपको इसमें से हर एक स्टेट ऑफ का मैक्सिमम चूज करना है। तो फर्स्ट स्टेट ऑफ नेचर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 5। सेकंड वाले का मैक्सिमम 3000। थर्ड वाले कितना है? 2। आपने मैक्सिमम ढूंढ लिया, उसके बाद आप बनाओगे रिग्रेट मैट्रिक्स। will you make regret matrix from maximum? हर एक चीज माइनस करो। So how did you get this? 5,000 minus 2,500. Okay, 5 minus 2,500. So it this comes to 2,500. How did you get next value? Correct. 5,000 minus 3,500. 5,000 में से ये तीनों values minus कीजिए तो you will get these values. 3,500 value minus किए to get this. 2,500 में से आपने ये तीनों value minus किए, you get this values. Okay? And इसमें से हमने maximum choose किया है. So 500,000 0. The maximum value is 2,500. 1,500 0,000. Maximum value is 1,500. 0,000 1,500. Maximum value. So what is the conclusion? Hence, we choose S, S2 or S3. Minimum of the regret matters. Okay. So please note down. तो एक ही क्वेश्चन को सारे मेथड आप एग्जाम में रिवाइज कर जाओगे तो दैट विल बी मोर
completed. Okay. So now we go to the last method. So we now go to the last method that is called as Hertzsprung criteria. Hertzsprung criteria में basically क्या है? They will give you a coefficient. I'll explain the concept first of all. Now, अभी फॉर एग्जाम्पल जब आपने मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया किया, मैक्सिमम आपने ढूंढा, उसमें से भी आपने मैक्सिमम वैल्यू चूज किया था. दैट मीन्स आप अज्यूम कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा होगा. ठीक है, तो वी विल गेन मोर पे ऑफ. दैट वाज द क्राइटेरिया यूज्ड. बहुत कुछ अच्छा होने वाला. दैट मीन्स वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ओके, वी वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. मैक्सिमम क्राइटेरिया में आपने क्या किया? उल्टा किया. आपने मिनिमम लिया. अरे बाबा कुछ भी ठीक ठाक नहीं होने वाला है, तो आपने मिनिमम लिया और फिर उसमें से चलो ठीक है शायद अच्छा हो जाए, तो आपने उसमें से मैक्सिमम लिया. तो दैट वाज मैक्सिमम क्राइटेरिया. ओके, Hertzsprung criteria is focusing on a variable. This variable is represented by the symbol alpha. Alpha मालूम है ना आपको कैसे लिखने का है? So alpha represents optimism. Okay. तो सपोज आपको बताया गया है कि अल्फा वैल्यू है 0.4. That means optimistic scenario 40% है. That means pessimistic scenario कितना होगा? 60%. So Hertzsprung criteria में आपको हर एक स्टेट ऑफ नेचर का कैलकुलेशन करना है. So when you say alpha is 0.4, 1 minus alpha will be equal to 1 minus 0.4 equals to 0.6. Okay. तो यहाँ पे मैं A लिख लेती हूँ. आपको अल्फा का सिंबल डालना है. ओके, सो नाउ द फॉर्मूला इज H equals to अल्फा इनटू मैक्सिमम पे ऑफ, क्योंकि ऑप्टिमिज्म की बात हो रही है, राइट, प्लस 1 माइनस अल्फा मिनिमम पे ऑफ, क्योंकि पैसे की बात हो रही है. 4 multiplied by what is the maximum payoff for the first state of nature? 5,000 plus 1 minus alpha. 1 minus 0.4 is 0.6. ब्रैकेट में कितना आएगा? मिनिमम पे ऑफ. मिनिमम पे ऑफ कितना है? 2500. इसको सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए. ठीक है, तो सेम वे यू हैव टू डू फॉर द रिमेनिंग.